अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में जानेंगे। 1670 में पैदा हुए और 1729 में इनकी डेथ हुई। विलियम कॉन्ग्रीव इंग्लिश प्ले राइट थे, पोएट थे। बिडली वेस्ट यॉर्कशायर इंग्लैंड में पैदा हुए। किलकिनी कॉलेज में जोनाथन स्विफ्ट से मिले, जहाँ पर उनके ज़िंदगी भर के दोस्त रहे। डिसाइपल थे ड्राइडन के। 30 साल की उम्र में इन्होंने 4 कॉमेडीज़ लिखी जिनमें द वे ऑफ द वर्ल्ड, लव फॉर लव एंड वन ट्रेजेडी, द मॉर्निंग ब्राइड थी। स्पेशलाइज थे सेक्सुअल कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। किट कैट क्लब के मेंबर थे और जर्मियर कॉलियर का जो आर्टिकल था उसमें बहुत ज़्यादा इन पे तनकीद की गई है। और बाद में इन्होंने एक रिप्लाई भी दिया, अमेंडमेंट ऑफ मिस्टर कॉलियर्स फॉल्स एंड इम्परफेक्ट सिटेशन। कॉन्ग्रीव ने कभी शादी नहीं की। 1710 में गाउट ऑफ कैटरेट्स में की बीमारी से सफ़र हुए और 1728 में इनका कैरियर एक्सीडेंट हुआ जिससे कभी इन्होंने रिकवर नहीं किया और 1729 में ये इनकी डेथ हुई और पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर एबी में दफनाए गए। कॉन्ग्रीव को अनडाउटली द ग्रेटेस्ट ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी राइटर माना जाता है और ये एल्बर्ट कहते हैं। फेमस कोटेशन का जिक्र करें, ओ फी मिस यू मस्ट नॉट किस एंड टेल, ये फार फ्रॉम ऑल फॉर लव से लिया है। म्यूजिक है चार्म टू सू द सैवेज बीस्ट, ये मॉर्निंग ब्राइट से लिया गया है। हेवन हैज़ नो रेज लाइक लव टू हेट अ टर्न नॉर हेल अ फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉन, ये मॉर्निंग ब्राइट से ये कोटेशन ली गई है। अगर हम फेमस वर्क्स का जिक्र करें तो ओल्ड बैचलर 1693, द डबल डीलर 1694, लव फॉर लव 1695, द मॉर्निंग ब्राइट 1697, द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700, एपिस्टल टू लॉर्ड हेलिफिक्स और इनकॉन्ग्रीटा, लव एंड ड्यूटी रिकॉन्सिल्ड, ओनली नावल बाय हिम। ओल्ड बैचलर का जिक्र करें पे एक फर्स्ट प्ले है 1693 में लिखा था। हार्टवेल ओल्ड बैचलर है और औरतों से नफ़रत करता है। एक सिल्विया की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, ये नहीं पता होता, नॉट नोइंग हर टू बी forsaken mistress of Venlo, he is lured to marry Sylvia but he later discover her true character as a prostitute. The comedy includes the amusing character Sir George Whittle, a foolish knight who allow himself to be really married to Sylvia under the impression that she is a wealthy Araminta. डबल डीलर का अब हम जिक्र करते हैं। कॉमिक प्ले है कॉन्ग्रीव का, 1694 में लिखा था, पब्लिश हुआ 1920 में मैगजीन में। मेलिफोन नेफ्यू एंड प्रोस्पेक्टिव हेयर ऑफ लॉर्ड टचवुड इज अबाउट टू मैरी सिंथिया, डॉटर ऑफ सर पॉल प्लेंट। लेडी टचवुड, अ वायलेंट डिसोल्यूट वुमन, वाज आल्सो इन लव विद मेलिफोन बट ही रिजेक्ट्स हर एडवांसमेंट। लेडी टचवुड फाइंड्स मास्कवेल, अ डबल डीलर हु हैज़ बीन हर लवर, ही प्रिटेंड्स टू बी मेलिफोन फ्रेंड. He aspires to cheat Maleficent of Cynthia and get her for himself. Masqual leads Plaint to suspect an intrigue between Maleficent and Lady Plaint. He also leads Touchwood to suspect an intrigue between Maleficent and Lady Touchwood and contrives that Touchwood shall find Maleficent in his wife's chamber. Maleficent is disinherited and Cynthia is to be made over the Maskwell. Here the plot of Maskwell goes wrong because Lord Touchwood informed Lady Touchwood of the Maskwell intention to marry Cynthia. This awakens the jealousy of Lady Touchwood, so she finds Maskwell and rebukes him. Lord Touchwood also perceives Maskwell's treachery and defeats his फाइनल अटैम्प्ट टू कैरी ऑफ सिंथिया। लव फॉर लव ये कॉमेडी है कॉन्ग्रीव की, वो 1695 में लिखी थी। वैलेंटाइन हैज़ फॉलन अंडर द displeasure of his father because of his extravagance, so was besieged by creditors. His father, Sir Sampson Legend, offers him £4,000, only enough to pay his debt, and then he should sign a bond giving his right of inheritance to his younger brother Ben. As Valentine was embarrassed, he signed the bond. Valentine was in love with Angelica, who poses a fortune of her own, but she had not decided her partner. Sir Sampson had arranged a match between Ben, who is at the sea, and Miss Prue, a awkward country girl, the daughter of Forsyth, a superstitious old fool who claims to be an astrologer. Valentine realized his
Ruin entitled by a signature on the bond. He tries to move his father by submission but fails. He then pretends to be mad and unable to sign the final deed of conveyance to his brother. Finally, Angelica intervenes and introduces her Samson to propose marriage to her, pretends to accept and get possession of Valentine bond. When Valentine is in despair at finding that Angelica is about to marry his father, declare himself to sign conveyance. Angelica reveals the plot and tears the bond and declares her love for Valentine. The Mourning Bride, ये ट्रेजिडी है जो कॉन्ग्रीव ने लिखी है, और इसके बाद द वे ऑफ द वर्ल्ड है, ये बहुत 5 एक्ट का फेमस प्ले है इनका। और अब हम ज़रा समरी डिस्कस करते हैं मॉर्निंग ब्राइड की। कॉन्ग्रीव ने एक ही ट्रेजिडी लिखी है, इसमें फेमस लाइन है, म्यूज़िक हैज़ चार्म टू सूद savage beast, or heaven has no rage like love to hater turn, nor hell a fury like a woman scorned। प्ले जो है अल्मेरिया के बारे में है, डॉटर ऑफ किंग मैनुअल ऑफ ग्रेनाडा हु सीक्रेटली मैरिज अल्फोंसो। अल्फोंसो इज द सन ऑफ हर फादर हेटेड एनिमी किंग इन सेल्मो ऑफ वेलेंसिया। अल्मेरिया जो है वो सेपरेट होती है अपने हस्बैंड से शिप रैक में, और फिर बाद में मिल जाते हैं जब अल्फोंसो डिस्गाइज करके पकड़ा जाता है मैनुअल के साथ, और उसके साथ क्वीन ज़ारा भी होती है। मैनुअल जो है मिस्टेकनली एग्जीक्यूटेड बाय his own orders. Zara commits suicide and Alfonso helped overthrow the government and publicly regain his bride. Way of the World. Act 1 is set in Chocolate House where Maribel and Fennel have just finished card games. A footman informs them that Whitwell, male servant of Maribel, and Phobel, female servant of Lady Wishwood, never married. Fennel encourages Maribel to marry Melmoth as he was already in love with her. Maribel is informed by Whitwood and petulant that if Lady Wishwood marries, he will lose 600,000 of Melmoth's inheritance. He will only get this money if Lady Wishwood gives her consent about the marriage of Maribel and Melmoth. Act 2 जो है वो सेंट जेम्स पार्क में सेट होता है। तो ये थी मेजर स्टोरी विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में।